Good morning, students. Assalamu alaikum. How are you all? I hope so. You all will be fine. Today, the topic which I'm going to teach you over here is cells. When this word cell is used, different concepts come into our mind. For example, we might think of the cells which is being used in batteries or remotes of our televisions or ACs, etc. And there is another concept related to cells, and that is the cells in our body. So right now we are going to talk about cells of life. So right now we are talking about cells of life. So cell, if I asked you, or if I simply say that the importance of bricks for a building, like they are the basic building block for the building, or you can say they are the basic unit for a building. In the same way, cells of the human body or cells in the human body, they are basically the basic building block. ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से, या बहुत सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि सेल इज़ अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर लाइफ। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेल थ्योरी बन जाती है कि सेल इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर लाइफ। ठीक है, in our body, inside our body, all the processes which are taking place, or the organs which are present inside our body, each and every organ contains different types of cells, and there are millions and trillions, and simply I would say there are uncountable cells in our body. And if we talk about, and each and every cell has a particular structure, and when we talk about the structure of any cell, so obviously it has different parts. We'll say it has different parts. And if we talk more scientifically, instead of the word parts, we can use, in fact we have to use the word organelles, right? We don't use the word parts, but I just use this word parts and just to make it a bit easier or to elaborate it. Otherwise we have to use that each cell has different organelles, right? In which we will be discussing each and every organelle in detail, but just to explain you that cell has different parts. Okay, and those parts ko we technically or scientifically we use the word organelles for them. We use the word organelles for parts of the cells, like the different parts which are present inside a cell, we call them organelles. Okay, so as I am focusing on this word organelles again and again, because at this level this is a new terminology for you. ठीक है, आप लोग parts का word तो सुनते रहते हैं कि जी किसी भी चीज़ का जब हम बात करते हैं तो we mostly say कि ठीक है it has different parts. So in the same way हम जब cells की बात करेंगे, जब हम cells inside our body की cells की बात करेंगे, तो we are not going to use the word parts, we will use the word organelles, right? That's why I'm focusing, or I'm repeating this word again and again, because this is the new terminology at this level as you have started this topic now. So the organelles, cell has different organelles. So what are those organelles? We'll talk about those organelles one by one in detail, their structure, their function, like their importance in the human body and all that. Okay, generally I'm just naming some of the organelles of the cell right now. One of the very important organelle of cell is nucleus. Another very important, in fact all the organelles are very important, obviously, because if even one single organelle is missing, or it is out of order or not working properly, so obviously cell is in trouble. In fact our whole body is in trouble. But this nucleus has gained a very you can say special place inside a cell, which we will talk about later on. Right now I'm just naming the organelles which are present in the cell. It's the nucleus, cell membrane, then mitochondria, then cytoplasm, then chloroplast, then cell wall, ribosomes,
these are just few organelles which I would like to discuss with you at this level. Other than that, there are so many other organelles which are present inside the cell, but right now we'll just focus these few organelles, right? Okay, so first of all, I'm just going to repeat their names again so that you can recall them, or you can know their correct pronunciation, because these are the new terminologies. These all terminologies are new for you. Like this is nucleus, cell membrane, ribosomes, cell wall, chloroplast, mitochondria and cytoplasm. मैं एक बार फिर ये बात रिपीट कर रही हूँ कि सेल में इसके अलावा और भी बहुत से ऑर्गेनेल्स हैं, बट दीज आर ओनली द फ्यू ऑर्गेनेल्स विच वी आर गोइंग टू फोकस राइट नाउ. ओके, नाउ वन बाय वन we'll talk about these organelles in detail, like their function, their structure, their importance inside a human body. Okay, like as I have given you the names of the organelles of a cell, so before going into the detail of each and every organelle, I'm just drawing over here a diagram or a structure, you can say, of a cell. This is basically a cell. This is one of the organelle of the cell which I'm going to discuss right now, and which I just have written the name as well just before 2 minutes back. That this is the nucleus. What it is known as? What it is known as? Nucleus, right? Acha, I told you when I was telling you the names of the organelles that this organelle has a specific or the special place inside a cell. Why? It has same, as you can say, importance inside a cell like the brain has in our body. ठीक है, अगर मैं स्टेटमेंट को दोबारा से रिपीट करूँ, इन आर बॉडी, हमारी बॉडी में सारे ऑर्गन्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है, लेकिन ब्रेन को हम थोड़ा सा ज़रा स्पेशल यू कैन से एडवांटेज देते हैं, या ये कह लें कि ब्रेन को स्पेशल इंपॉर्टेंस हासिल है, बिकॉज एज इट इज़ कंट्रोलिंग द होल बॉडी. इन द सेम वे, inside a cell, all the organelles which I just named before are important, but this nucleus is having a very, very important place in a sense, because it is controlling all the activities taking place inside the cell. So a very good example over here we can use is that the nucleus has the same place in the cell as the brain has inside our body. ठीक है, in other words हम ये भी कह सकते हैं कि like nucleus is acting like a brain of a cell. ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में जो ब्रेन की इंपॉर्टेंस है या जो फंक्शन ब्रेन का है, वही फंक्शन न्यूक्लियस का सेल के अंदर है, राइट? सो ब्रेन जो है इट इज़ कंट्रोलिंग आवर होल बॉडी. ठीक है, जो भी हमने एक्शंस परफॉर्म करने होते हैं या जो भी हमारी बॉडी ने एक्ट करना होता है, वो ब्रेन की तरफ से हमें ऑर्डर आता है या ब्रेन कंट्रोल करता है. इन द सेम वे इनसाइड अ सेल, न्यूक्लियस इज़ बेसिकली कंट्रोलिंग, जो फंक्शन है न्यूक्लियस का, कि इट इज़ कंट्रोलिंग ऑल द एक्टिविटीज़ टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल. ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई एम रिलेटिंग इट विद द ब्रेन. ओके, अब न्यूक्लियस इज़ बेसिकली सिंपली यू कैन सी इट्स अ राउंड स्ट्रक्चर. ठीक है, और इनसाइड द न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? DNA. नाउ व्हाट इज DNA? DNA इज बेसिकली deoxyribose न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, ये DNA की फुल फॉर्म है. Nucleus contains DNA inside it, and the DNA is basically, DNA stands for deoxyribose nucleic acid. मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, DNA stands for deoxyribose nucleic acid. ठीक है, और ये जो DNA है ये प्रेजेंट होता है इनसाइड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस का एक फंक्शन तो आई टोल्ड यू कि जी इट्स फंक्शन इज टू कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल. सेकेंडली इट कंटेन्स DNA. ठीक है, अब DNA बेसिकली क्या है? DNA इज़ अ जेनेटिक मटीरियल. ठीक है, क्या है DNA? DNA इज़ अ जेनेटिक मटीरियल. ठीक है, DNA क्या है जी? DNA इज़ अ जेनेटिक मटीरियल. अब यू माइट हैव हर्ड कि गॉड फॉरबिड कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए या कोई प्लेन क्रैशेज हो जाए, तो उसमें जी कहा जाता है जब समटाइम्स डेड बॉडीज़ जो है दे आर नॉट इन दिस कंडीशन टू बी आइडेंटिफाइड, तो वहाँ पे कहते हैं जी कि इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द डेड बॉडी, वहाँ पे DNA टेस्ट किया जाएगा रिलेटिव्स का विद दैट डेड बॉडी. ठीक है,
वाई वो वहाँ पे क्या क्यों डीएनए टेस्ट किया जाता है? एंड आई एम टेलिंग यू कि इट कंटेन्स जेनेटिक मटीरियल. तो इट मीन्स द वर्ड जेनेटिक मीन्स जीन्स से ये वर्ड आया है. और वर्ड genetic means कि this contains the genes which are transferred from offsprings which are transferred from parents to offsprings. ठीक है, मैं फिर से ये बात रिपीट कर रही हूँ कि डीएनए कंटेन करता है जेनेटिक मटेरियल विच आर बेसिकली द जीन्स. ठीक है, और जीन्स कहाँ से आती हैं? फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. ठीक है, तो यानी कि पेरेंट्स का ऑफस्प्रिंग्स उनके सिबलिंग्स के साथ सिमिलर होगा. पेरेंट्स का डीएनए उनके ऑफस्प्रिंग्स के साथ मैचिंग में होगा. ठीक है, दैट्स वाई दे कैन बी आइडेंटिफाइड. फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल ऐसे है कि अगर कोई फैमिली है लाइक मदर फादर और आगे उनके 3 बच्चे हैं, तो वो जो तीनों बच्चे हैं उनका जो डीएनए होगा वो आपस में भी आइडेंटिकल होगा और पेरेंट्स के साथ भी आइडेंटिकल होगा. तो दैट्स वाई वी से दैट डीएनए कंटेन्स जेनेटिक मटीरियल. और ये जेनेटिक मटीरियल कहाँ से आता है? फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स ये ट्रांसफ़र होता है. ठीक है, और डीएनए टेस्टिंग का मैंने आपको एक एग्जांपल भी कोट कर दिया है डीएनए टेस्टिंग से रिलेटेड. तभी डीएनए टेस्ट किया जाता है जब इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द आइडेंटिटी ऑफ किसी की आइडेंटिटी जब टेस्ट करनी होती है. तो डीएनए, क्योंकि डीएनए ब्लड ग्रुप्स भी डिफरेंट हो सकते हैं, बिकॉज ये मिसकॉन्सेप्शन है कि ब्लड ग्रुप सेम होते हैं. नो, ब्लड ग्रुप्स पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स के डिफरेंट हो सकते हैं, सिमिलर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं. वो कोई उसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. लेकिन डीएनए के केस में दिस इज़ फॉर श्योर कि एक फैमिली में यानी कि जो उनके बच्चे होते हैं पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग्स का जो डीएनए होता है दैट वुड डेफिनेटली बी सेम. ठीक है, ओके. सो न्यूक्लियस हमने पढ़ लिया. न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है इट्स जस्ट राउंड स्फेरिकल विच इज़ प्रेजेंट इन द सेल and it contains DNA, and DNA is basically a genetic material. So it means कि genes, DNA has a genetic information. DNA contains a genetic information. Okay. Other organelle जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की, that is cell membrane. What I'm going to talk about now is cell membrane. Cell membrane जो है basically it is, you can see the outermost boundary. ठीक है, ये outermost boundary है सेल की. अब आउटर मोस्ट बाउंड्री है तो द नेम इट सेल्फ इज इंडिकेटिंग कि व्हाट विल बी इट्स फंक्शन. हमारे घरों में अगर हमारी जो आउटर मोस्ट वॉल है या जो गेट है उसका क्या फंक्शन होता है? उसका सिंपल यही फंक्शन होता है कि वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है. एंड सेकेंडली इट अलाउज अस टू गो इन एंड आउट, राइट. सो इन द सेम वे सेल मेम्ब्रेन हैज़ स्मॉल सेमी परमिएबल. मैं एक वर्ड यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, सेमी सेल मेम्ब्रेन के लिए मैं एक वर्ड यहाँ पे लिख रही हूँ. आई थिंक सो इट वुड बी न्यू फॉर यू. सेमी परमिएबल. नाउ व्हाट इज सेमी परमिएबल? की जो सेल मेम्ब्रेन है इट हैज़ स्मॉल होल्स इन इट. ठीक है, इट अलाउज द केमिकल्स और मटेरियल्स टू गो इनसाइड द सेल एंड गो आउट ऑफ द सेल. ठीक है, और ये जो मेम्ब्रेन होती है ये सेमी परमिएबल होती है. सेमी का वर्ड होता है सेमी मीन्स हाफ. ठीक है, पार्शियली. और परमिएबल मीन्स इट अलाउज. ठीक है, तो सेमी परमिएबल मीन्स कि इट पार्शियली अलाउज. हर चीज़ को ये अलाउ नहीं करती. ठीक है, वट एवर इट फील्स कि इट शुड गो इनसाइड द सेल तो उसको ये अलाउ करेगी. और जो ये फील करती है कि इसको नहीं जाना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल जर्म्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, तो उनको ये अलाउ नहीं करेगी. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग सेल मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन as it allows the materials or the chemicals to go in and go out of the cell. ठीक है, अभी हमने 2 ऑर्गेनेल्स डिस्कस कर लिए हुए हैं, न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन. ओके, सो राइट नाउ वी हैव डिस्कस्ड 2 ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, सो आगे आने वाली और वीडियोस में और इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस ऑब्वियसली यू वुड बी लर्निंग अबाउट रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल्स एज वेल. ठीक है, बिकॉज दे ऑल आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. थैंक यू.